Hello everyone, welcome to ISOP. Everyone, today we will discuss answer writing, mains answer writing रो जोटा UPSC रो जो main test series exam already fast जोटा conduct हेई सारिछि जोटा कि मास अप्रैल 1 तारिख रे जो टेस्ट सीरीज हेतला ताको आज हम डिस्कस करूचे है ना। तो 1/4/2023 रे जो मेन टेस्ट सीरीज जोटा हम कॉम्प्रिहेंसिव मेन टेस्ट सीरीज फॉर द UPSC सिविल सर्विस पई हम देखबा 2022 पई जोटा UPSC स्टार्ट करिछि एंड दिस वुड बी द फास्ट टेस्ट रो आम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करबा कारण आम जहाँ प्रॉमिस करितलु कि वी विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन विथ द मॉडल आंसर as well as we will also copy check will be there, copy would be also check there. So ये सब ऑलरेडी हमें प्रॉमिस करथला एंड सेथि पे हमें डिस्कस करबो और ताको पे वी विल आल्सो कीप आवर दैट इज द टोन एंड प्रॉमिसेस. तो जदि हमें देखबा दैट मींस आज हमें देखबा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जोटा फर्स्ट वन जोटा कि ज्योग्राफी ऊपर थिला ओडिसा ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी ऊपर थिला ताको आज हमें डिस्कस करबा. ठीक अछि. तो फर्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखबा कि क्वेश्चन जेंति कि क्वेश्चन सेक्शन ए आज हम डिस्कस करिवे सेक्शन बी को आ गोटे पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्कस करबे बिकॉज़ बहुत अदरवाइज इट वुड बी वेरी लेंथी हिजबो. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए डिफरेंशिएट बिकॉज हमें देखिए द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड द वेस्टर्न घाट and explain its landslides subside zone as well. तो फर्स्ट दैट मीन्स जेतबे कोन से क्वेश्चन आपको मिलुची से कोची डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशिएट हमको कोठी ना लैंडस्लाइड को आपको कीवर्ड को सर्कल कर दवा कोठी हिमालयन रीजन वेस्टर्न घाट और सबसाइड जोन कोन बस एतिकी. दैट मीन्स आवर आंसर मस्ट बी होवर मस्ट कन्फाइन टू दिस keywords of this particular question जो डिमांड्स और रहबा दरकार. सो जेते बेले भी दैट मीन्स हमको लैंडस्लाइड बस ताले आंसर केमती होबा देखा देखो आंसर इंट्रोडक्शन जो तमरो इंट्रो पार्ट है ना ये दी प्रकार हे परिबो. ईदर इट वुड बी कन्वेंशियल हमें कहबा इट वुड बी बाय कन्वेंशन और देयर इज नो सच कन्वेंशन हमें जाको कह कन्वेंशियल आंसर है ना. जदि हम देखो और इट वुड बी ज्यादा कहते कि नाउ डायनामिक इट ईदर इट वुड बी ये तमरो ट्रेडिशनल हे परे और डायनामिक हे परे. जदि हमें डायनामिक कथा मु देखिबी सपोज मते कहै छी कि सारे इंट्रोडक्शन लिखंतु तो मु केमति लिखि मु कभी इन द ईयर 2022 में जदि देखिबा सो इन द मंथ ऑफ जदि हमें देखिबा कि फॉर एग्जांपल जदि हमें देखिबा कि डिसेंबर कथा मु कहू कि डिसेंबर अक्टोबर नवंबर ये सब बहुत सारा लैंडस्लाइड हेछि. फॉर एग्जांपल यूके उत्तराखंड रहिछि, हिमाचल प्रदेश रहिछि, जे&के रहिछि, केरला रे लैंडस्लाइड हेछि, महाराष्ट्र रे लैंडस्लाइड हेछि. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लैंडस्लाइड. तो तुम आंसर लिखले बेले कोन लिखिबो इन द ईयर 2022 several parts of India experienced severe to moderate landslide like Uttarakhand, Himachal Pradesh, J&K, Kerala. These were the regions where the landslides occurred. Okay, then I'm asked about the causes of landslide. Then comes to the causes of landslides. Landslide, the prone area for the landslide is the Himalayan region, Western Ghat. Basically, these are the two regions which are the prone to the landslides. So we will talk about that. Okay, so now हमें देखिबा ताको एबे तो हमें causes को आसबा. Now so introduction एमती रहिला, then we will comes to the causes. Okay, the causes को हम देखिबा. Otherwise यदि traditional तमे लेकुचो और जाको में के like conventional answer जाको में कहचे कि what is the definition. The definition landslide means what. ये हमें landslide कहले हाँ अच्छा एथिरे तमे गोटे figure art करबा landslide how the land is moving down आको तमे गोटे landslide रो एमती देई परिबो. तो तुरंत तमे इंडिया मैप ड्रॉ करिबो. इंडिया मैप करके ठीक कोन देखिबो you have to show the landslide zone. These are the landslide zone, this one is the landslide zone. Here you have to draw the map. तो गोटे मैप रहिबो आ गोटे एमती तमे देखैबो कि केमती लैंड टा स्लाइड करूची. सो टू मैप्स यू कैन ऐड इनटू द आंसर. तमे एमती दीटा मैप ऐड करि परिबो. Okay, a traditional जो conventional answer रखन था कि landslide is means the mass movement of the land that slides on the slope due to the what landslide कहते हुए now when the that is what the shear force would be more than the shear strength of the rock that time the landslide will occur. Apart from that, okay, ये रहेगा तुम्हारा traditional हमें कहीं परिवार. Causes of Himalayan region. First से Himalayan region causes कौन? Himalayan region is tectonic. तो आपको एमती point 1 कर देबो, 2 कर देबो, 3, 4 like this. So आपको point wise करके करिवो.
otherwise I2I roman letter तुम कहि परिबो so and underline करिबो ए सब को underline करिबो ओके आको underline करिके लिखिबो so tectonic fast which is tectonic region see this region is altogether different from this region because here this one is a static area and geographically very static region this is the Western Ghat but the Himalayan region is a transition zone and the tectonically active and that region is the fault lines and the fault different fault axes are also there fault axes and fault lines are there Himalayan region is having ample number of what fault lines or the fault axis okay so that is why this region is always a what a agile zone or that would a tectonical active I mean zone कहवा जो थरके collision चलती तो two plates को भीतर collision चलती and that is why so let's say that would be fault axis like the great boundary middle boundary front okay the great boundary fault जाको को middle है गला Indo suture zone को था नहीं जो so different fault lines are there the सब fault lines there that is why this zone is what earthquake prone zone so this is the first point then steep slope obviously the Himalayan region is having more steep the Himalaya is more steeper as compared to the Western Ghat so differentiate करे अपन कहे ना so that is the steep slope that is why the slope jete steep रहिबो that means landslide सेते अधिक हबो because the gravity will act and the जाको हम कहबे जो shear force would be more than the shear strength then monsoon obviously the Himalayan foothills रे आमे देखबा foothills रे बहुत सारा rainfall होउची ता आधारा भी आमे कहबा deforestation rainfall हना ये तारा द्वारा ही landslide हबो कना land रे weight हे जिवो that would becomes down तो ये monsoon देखा जाउची okay destabilize the slope would be destabilized because तादरा कोना tea garden वगैरह होची deforestation होची and apart from that glacial activities भी हमको तुमको देखा जो melting the glacier ना destabilizing the slope and trigger the landslide या व्यतीत तुम लिखि परिबो like the developmental activities for let's say for the चार धाम project को था नहीं जो ना उत्तराखंड रे होची dams को था नहीं the hydraulic pressure generate होची because of the dams because of the what road कथा नहीं जो because of the hydroelectric project कथा नहीं जो tunnels कथा नहीं जो बहुत सारे tunnels असुची so these and also unsustainable urbanization and what apart from these points apart from this point you can also write that what the developmental activities like Chamadhar project dam कथा नहीं जो areas tourism overload करा जो tourism बहुत ही ज़्यादा होची rapid urbanization unsustainable like the Joshimath कथा लिखी परिबो तमे so these are the causes of Western Ghat sorry Himalayan region now comes to the Western Ghat part को जदि हमें देखिबा Western Ghat रे heavy rainfall हुए obviously तमे जान Kerala region खास करके हमें Kerala region रे देखिबा this region experiences huge rainfall that is more almost what 400 centimeter rainfalls तुमको देखा जो 250 to 400 centimeters rainfall so high rainfall zone that is deforestation because of what resort वगैरह hotels agriculture bad agricultural practices these are also another causes तो खास करी तमने समझते जान that is what जदि हम देखो वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन पे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट कमिटीज गठन करा जायछि एंड कमिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सजेस्टेड फॉर द व्हाट that the Western Ghats should be declared as a that is what ताको हम कहबा no developmental zone जाको हम कहबा no developmental zone तक हमें डिक्लेयर करिया दरकार तो दैट मीन्स गोटे सेंसिटिव जोन जहाँ मुझे कहबी कि डिफरेंट कमिटीज आसी और से कमिटी कही जमी तुम गडगिल कमिटी कथा नहीं जाओ दे आस्क द गवर्नमेंट एंड दे सजेस्टेड द गवर्नमेंट के वेस्टर्न घाट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अ वेरी सेंसिटिव जोन और द नो डेवलपमेंटल जोन जहाँ आम कहीपर द एग्रीकल्चर होची जमती टी होची कॉफी रबर है ना इवन नाउ दे आर डूइंग आल्सो द व्हाट palm oil cultivation deforestation also heavy rainfall also this region also occurring so these are the causes construction activities dam वगैरह सूची roads सूची hill station overall landslide तो the Himalayan regions are the triggered by the tectonic activities heavy rainfall while the Western Ghat is deforestation and the agriculture activities so these are would be the first question को देख ले now landslides हमें देखो ये लैंडस्लाइड सबसाइड जोन कौन सबसाइड जोन मीन्स गोटे बहुत बड़ एरिया गोटे सबसाइड कर ड्यू टू द लैंडस्लाइड अकरेंस ऑफ द लैंडस्लाइड हो पारे लैंड धीरे 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 फॉर एग्जांपल जोशीमठ कथा नहीं जाओ है ना एठी कौन होचे लैंडस्लाइड को धीरे 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 लाइक द 60 फैमिलीज लिविंग अनहेबिटेड
houses sinking town जाको हमें कहोचे evacuated temporarily evacuate कराउची. So what are the that means structural measures कोन तो हमें देखिबा like the what planting avalanche preventing forest, then terrace farming करा जो एठी स्टेप जाको एग्रीकल्चर को जे avalanche control fence गुडा को जे otherwise avalanche आसुची बहुत सारा like recently 2-3 तळे 2-3 days back जदि हम देखो सिक्किम रे avalanche रे 7 जन टूरिस्ट मरि गेले जोटा कि तमरो सिक्किम हमर जो नाथुला पास नियर बाय स्नो that is what एक मिनट स्नो कार्निस कथा नहीं जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो एंड फॉलोइंग द व्हाट एनडीएमए गाइडलाइंस दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो अच्छी तांकर गाइडलाइंस को फॉलो करिबा दरकार. तो ये थिला हमर लैंडस्लाइड वाला क्वेश्चन जो को मैं डिस्कस करतले. Next time देखो से कुछ एलिनो लालिना वाला क्वेश्चन and substantiate your views on the Indian perspectives. Discuss the causes and consequences. देखो causes consequences कौन. Here like the map is given. एलिनो ये होची तमो warm water phenomena. लालिना होची cold water phenomena or the cold current. That is here. Okay, El Nino time re kono way there would be warm current flows in the Peninsular coast and La Nina time re the cold current will flow in the Peninsular coast. So this is one kind of what I would say El Nino and La Nino. They are the sea surface temperature difference which is associated with the atmospheric circulation of the over the Pacific Ocean. And whenever there would be, see, when we talk about the El Nino and La Nina, that is this phenomenon is over in the Pacific Ocean. The Eastern Pacific Ocean and the Western Pacific Ocean, they are taken into consideration. El Nino La Nina jethroda huye, obviously as the Pacific Ocean is itself the 2/3 of the total globe, that is why any kind of changes is being evidented or is being going on the Pacific Ocean, that will have obviously a huge impact on the whole climatic region of the earth and the global as well, because the whole globe as well. That's why any kind of changes is occurring in the Pacific Ocean is always makes its significance for the rest of the world, and we have to have the concentration and to put energy and to have research on that particular development which is going on the Pacific Ocean. So Pacific Ocean रे जहाँ भी होगा हम ऊपर impact पक्के बेटा final. As the Indian subcontinent, if you see the Indian subcontinent, what will happen if the El Nino year is going on? That means we will have deficit rainfall. We will have deficit rainfall. If the La Nina is going, we will have what sufficient rainfall, or that would be it could be excess rainfall as well. So that is where the implication of the Indian subcontinent would be the El Nino time. It could be a deficit, or that will lead to the drought condition. Like in the last 3 years, it has been evidented that it has been going the La Nina year, and that is also called as the triple dip. Triple deep the La Nina year is going on. So this year, by in 2023, that may reverse and the El Nino might be there. Okay, that would be. So this is all about El Nino La Nina ko thame dekhethele है ना. Consequences are consequences, but there would be some region will have flooding, some region will have less rainfall. Like if I show here in map, in case of El Nino, what will happen? This region will have less rainfall, this region will have less rainfall. But in case of El Nino, correct me, in case of El Nino, where the warm water would be here, and in that circumstances, the Australia, there would be deficit rainfall, here would be deficit rainfall, but in the coastal region of Africa, it will have good rainfall, here it will have the good rainfall. But in case of La Nina, what happens that the condition would be reversed. The condition would be reversed, like here would be good rainfall, here would be good rainfall, and here would be less rainfall. So those regions which are getting pretty good rainfall, that region will have less rainfall, like this. So that would be rainfall, but vice versa would be, I reverse, the condition would be also reversed. Okay. ओके सो ट्रिपल डीप जोटा मु तो कहली बहुत जर्थन चलची ये तुमको 3 वर्ष जोटा ट्रिपल डीप चलची नॉर्मल रो एक्सेस रेनफॉल हमको एविडेंटेड हेची हना साइक्लोन चवाथ इन ओडिशा ड्यूरिंग 2021 हना स्टैंडिंग एतकी क्रॉप को से खेती करिची पाकिस्तान रे भयंकर फ्लड आस्तिला तमरे जंच ravaging flood in the Pakistan, and so both I would say this triple deep has created
water problem, that means it's a logging problem. But when it comes to the El Nino year, there would be less rainfall. Okay, जो हमें लालिना रे तो देखी थे, but El Nino रे कौन पर there would be drought condition. In Australia, no rain to rahibani, that would be, it would be deficit rainfall. In India, the India rainfall would be, it would be monsoon would be weak monsoon, so that would be the consequences of El Nino. Okay, बाकी पूरा explain करा दीजिए El Nino La Nino है ना, आंसर है. Now we will comes to what, तो हमें देखो what are the forces influence the ocean current. से कुछ ocean current को किए further. See, ocean current is always what? Ocean current means the mass movement of the ocean water into a certain direction. Under the influence of what? Under the influence of the flowing or the blowing wind. So, and describes their role in the fishing industry of around the world. That means कुछ ocean current से केमती influence होची, or the forces that influence. See, ocean current हमें definition लिखी था कि movement of the mass of the surface oceanic water into a different direction हम कहते हैं with the seasons as well. The ocean current, that does not means that will throughout the year it would be same. जब भी हो ताकू हमें से मैटर को हमें देखो ने करना चाहिए, हमें बेसिक क्लास रिपोर्ट हो. These are generally large masses of water that would flow. So, our influence, what are the forces that, like the wind, global wind, and ocean current का तरफ है. देखो salinity difference तरह ही परिबो, it would be salinity. There would be pressure difference तरह ही परिबो, wind system तरह ही परिबो. Then it would be atmospheric pressure ही परिबो, atmospheric pressure difference. So obviously there are many chances, I would many forces out there that influences जो मन की influence करूची. Done. That is influencing हम कहबा. तो जमते मो तुमको global wind कथा नहीं जाओ, salinity कथा नहीं जाओ. That will also salinity, temperature, density, बहुत सारा फैक्टर था. Pressure, ओशन करंट डेवलप हो रहा बहुत सारा, प्रेशर, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, विंड है ना, wind. So many factors are there for the growth of or that influences. So many factors are there that will affect the what or that will impact, or I would not say impact, or that would responsible or influences the ocean current को. Then even mid oceanic रीच कथा नहीं जाओ, shape of continent कथा नहीं जाओ, water gradient कथा नहीं जाओ, बहुत सारे factors होची. So these are the factors हमें तुम्हें लिखी पारिबो, like temperature, salinity, density, Coriolis force, land mass कथा कहितली है ना, ये सब मु तुमको factors कहितली ocean current को. Now fishing industry ऊपर केमती impact पकाए. For example, if I draw the North America continent out here, so like this would be the North American continent. Here is your what, that is the Greenland. Now this region is the warm Alaska, that means cold Labrador current is coming, cold Labrador current, and here would be the Gulf, Gulf Stream. The Gulf Stream is moving. So warm and plus cold water meeting hochi. Here is the Newfoundland. Newfoundland. This one is a what, the world's largest fishing ground. So here you can see the fishing ground formation. That means ocean current will lead to the formation of the fishing ground, and that is why here will be the fishing ground. Japan fishing ground देखा जो, UK जदि हमें देखा, that is the Dogger Bank fishing ground देखा जो, Brazilian coast देखा जो, and Argentina coast, न्यूजीलैंड पाखर देखा जो. These are the area जो हमें केवा, like here you can see the North America जो कि तमरो phytoplanktons रो growth होती करेगो. Phytoplanktons रो growth रहेगा. Phytoplanktons like zooplankton आसीबो, then it would be small fish, then large fish. So food chain will develop. Obviously the fishing industry will grow out there. टेस्ट सीरीज भी आगो को चलो, डोंट वरी. मेन टेस्ट सीरीज कर बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे है ना. तो जमती गल्फ स्ट्रीम तुमको कहली,
है ना ये जाकि मिसिबो कोठी लैब्रेटोर आसुची लैब्रेटोर कोल्ड करंट सहित मिसिला परे फॉर्मेशन हबो है ना जेमति जापान पाखरे वेसियो क्रोशियो मिसिकी होची जोटा मु तुमके बे ब्राजील कथा कहउथली है ना अर्जेंटीना ब्राजील कथा कहउथली एठी फॉल्कलैंड कोल्ड करंट एठी भी फॉर्मेशन होची देन तुमको एटा तुमर गल्फ स्ट्रीम जाकि अटलांटिक ओशन रे है ना ए जाकि का सहित जो लैब्रेटोर आसीबो लैब्रेटोर कोल्ड करंट सहित मिसिबो ये तुमको देखा जिवो सो दीज आर द एरियाज हमको देखा जिवो है ना फिशिंग जोन विल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को में आसीबा why there is no formation of the delta by the river of the western ghat देखा सो क्वेश्चन को जदि हमें देखबा by the river of the western ghat means those river flowing towards the west why they are not forming the deltas the question is those river flowing to the west coast of the India so why they are not forming deltas now this one is the question so if you see the question ro answer kono tome likhibo ke deltas are the landform which are formed due to the depositional activities by the large rivers simple the world largest delta is the what Sundarban delta ye likhidela me delta ro but in India maximums deltas are situated in the western coast in the eastern coast of India but there is no delta is being formed in the western coast of India because of then you have to write okay so and it should have at least this much of map you have to draw then तमें लिखिया स्टार्ट करो then why देखो डेल्टा फॉर्मेशन पे न हबार कारण होची delta western flowing rivers they are flowing through the Rift Valley first they are flowing through the Rift Valley that is why they're not carrying much of the sediments or the material which is required for the growth and development of the delta so that is this is one of the reason the second point jodi ame dekhiba these rivers are the short river so being the short river their carrying capacity and their material which is being deposited that is very less then third question ame dekhiba these rivers are flowing through the hard rock so rock jetro de konsi river jete Rift Valley de jai ki marble de ki jauchi they would have very least capacity to erode the surface and to have the sediment whereas the like Ganga, Brahmaputra, Kathanai, Godavari, Kaveri, Krishna, Mahamanati, all these rivers they are flowing through the plain region, and as the rivers are flowing through the plain region, they are getting ample amount of the sediments. They are deposited into the coastal region being formed, and that will definitely that is helping for the formation of the deltas out there. So these are the factors we need. Okay, so ये हमको देखिए हम लोग okay and on the top of that the western coast is what also known as the deep coast or जाको हमें कहते हैं submergent coast जाको हमें कहूँ submergent coast so that is also one of the region कि why the deltas are not formed out there so overall हमें देखिए कि why these regions the deltas are the rivers are very short and agiles they are not covering very long path जब तक डेल्टा फॉर्मेशन पे जदी कंडीशन देखो ये सारा सारा का क्वेश्चन हमें वेस ऑफर जो हमें फिजिकल क्लासेस रे पढ़ी छु ऑनलाइन क्लासेस रे पढ़ी छु डेल्टा फॉर्मेशन पे कंडीशन होची लॉन्ग रिवर इतवा दरकार कैरिंग कैपेसिटी बहुत हवा दरकार जो हमें जाको कहते सेडिमेंट ये बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट हवा दरकार लॉन्ग रिवर हवा दरकार रिवर शुड पास अस थ्रू द प्लेन सो दैट इट विल हैव मच मोर अबाउंडेंट मटेरियल्स देन इट शुड बी इमर्जेंट कोस्ट जाको हमें इमर्जेंट कोस्ट कहते so all these are the factors which is required and the long river so these are required but whereas the जदि हमें देखो है ना जो वेस्टर्न घाट जदि नर्मदा तापी these rivers so जदि हम देखो material which is carried by this river is very less है ना सबमर्जेंट कोस्ट जोटा मु तुमको कहली सेडिमेंट अकोमोडेट हे पारुनी है ना बहुत सारा फैक्टर्स हमें थाए है ना एंड दैट जेमति कि तुम लिखवा टाइडल रे छी टाइड भी बहुत बड़ा फैक्टर्स करे तो दीज आर द रिवर जोटा कि ईस्ट फ्लोइंग हम के बाद दैट इज व्हाट ये कौन सम एग्जांपल ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द वेस्टर्न घाट बट डोंट ये गोदावरी ये एग्जैक्टली आपको टिके करेक्ट कर दो ये आंसर गलत दिया है ना आपको टिके करेक्ट कर दो तुम मैंने है ना आपको टिके करेक्ट कर दो लाइक कैंसिल दिस वन दिस वन इज करेक्ट तो ये टिके करेक्ट कर दो है ना तो आपको टिके करेक्ट कर दो ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन आसी कि 5 नंबर क्वेश्चन जदि हमें देखिबा से 5 नंबर क्वेश्चन कहिछि कि
जदि आम क्वेश्चन पढ़ा कि why major hot desert in the northern hemispheres are located 20 to 30 degree north and on the western side of the continent. On the western side of the continent, this is one. So desert कहले कौन simple हमें कहबे desert means what, the arid or the semi arid region. Desert means arid where the rainfall is less than 25 centimeters annual rainfall हमें ताको desert area बोली कहचे. Desert would be have the sand and the very dry soil. I mean, moisture of the soil is very less. Okay, the deserts हमें let's say तमें लिखिबो that question रो अनुसार ही आंसर लिखिबो सबले जेते लिखे छै why majority or the majority of the deserts they are found, they are located 20 to 30 degree भितरे तमें लिखिबो डेजर्ट लाइक सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट को था नहीं जो, और आई वुड से कालहारी डेजर्ट को था नहीं जो, और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को था, दे आर सिचुएटेड इन दिस लैटिट्यूड. बोथ द हेमिस्फीयर ए सब एरिया रे हमको डेजर्ट देखा होची. व्हाई? ना बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कोन ना, दिस लैटिट्यूड इज ए सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन. This one is what? Subtropical high pressure area. High pressure means equal to wind will diverge away. As wind diverges away, there would be what? No rain. So rainfall ହେବ ନାହିଁ. ओके, एक्जाक्टली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो जेहेतु आम देखा जमी हार्डले सेल जो अच्छी, हार्डले सेल एंड फेराल सेल मझी एरियाटा जो रहिबो, हार्डले सेल फेराल सेल रो मझी एरियाटा जदि तमे ट्राई सेलुलर मॉडल के पढ़िथिबो है ना, 1 2 3 सेल थाए, हार्डले सेल, फेराल सेल, पोलार सेल. दिस मिडिल एरिया इज द डेजर्ट फॉर्मेशन. मिडिल एरिया रहता है कौन पे? बिकॉज ऑफ द सबसिडेंस ऑफ एयर, subsidence of air from the atmosphere ba ame keba high atmosphere ku subsidence of air hai thai. So that would be area. Okay, hope you are getting me. So that is why these are the area mein subsidence of area and itself the high pressure. Because of the high pressure joku so kon hoje rainfall habo nahi. So that is the ame keba this would be high pressure belt. That is why wind would be diverse. There would be no convergence of the wind, because convergence equal to low pressure, divergence जति ame keba jaku koche centrifugal force, that would be but high pressure जोटे की rainfall तुमको करेबो नाही. देन से कोची कॉन्टिनेंट रो वेस्टर्न साइड रे कहीं के देखा जाए, बिकॉज कॉन्टिनेंट रो वेस्टर्न साइड रे लेट से हमें के बाद थार डेजर्ट को था नहीं जो, सहारन डेजर्ट को था नहीं जो, अटाकामा डेजर्ट को था नहीं जो, पाटागोनिया डेजर्ट को था नहीं जो, कालहारी एंड आल्सो द कैलिफोर्निया डेजर्ट को था नहीं जो. दीज ऑल डेजर्ट्स आर द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट. देन व्हाई वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट? Because for example, if I say India, as the easterlies are coming, they will strike the eastern part of the continent. The western part will have very less impact of the easterlies. Like that is why, like the South America, there would, the easterlies are coming, they will have less impact in this part, and that is why there would be desert will be formed. The desert western part formation हमारा बहुत गुड़ा factors अच्छी. This is not the only factor. गोटे तो कहली मु तुमकी ईस्टर्लीज विंड को था. आउ गोटे फैक्टर होचे कोल्ड करंट थाए. फॉर एग्जांपल तुम जदी कहबो कि कोल्ड करंट एंड द इंटीरियर लोकेशन, लेट्स से दीटा फैक्टर्स थाए. जदी कोल्ड करंट जेमति कि तुमरो साउथ अमेरिका कोस्ट रे कोन करचे कोल्ड करंट, हम्बोल्ट कोल्ड करंट अछि, दैट वे एठी तुमरो अटाकामा डेजर्ट फॉर्मेशन होची. अटाकामा डेजर्ट फॉर एग्जांपल आम कैलिफोर्निया पाखे कैलिफोर्निया एरिड एंड द डेजर्ट फॉर्मेशन होची, जेमति तुमको बोजेफ डेजर्ट हेते बट अल्ताई तो नो मोजेफ डेजर्ट कथा कहते खास करी मुझे मोजेफ डेजर्ट अच्छी, कैलिफोर्निया ड्राई लैंड अच्छी. दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द कैलिफोर्निया कोल्ड करंट. जदि तुम कह सार इंडिया रे केमती थार डेजर्ट होची, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर लोकेशन, बिकॉज ऑफ इंटीरियर लोकेशन जो होची एंड ईस्टर्लीज रा इन्फ्लेशन कम थाए. सो दैट इज व्हाई कोटी कोटी लीवार्ड साइड भी देखा जाए, लीवार्ड इम्पैक्ट भी देखा जाए. सो दीज आर द रीजन आम कह कहीं वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट तुमको डेजर्ट देखा जाए है ना. तार एग्जाम्पल लिखिया पड़े. यू हैव टू mention the example like the Kalahari desert, like the here you can see the Sahara desert को था लिखी परिबो, आटाकमा desert मु कहतली, सोलोराम को था नहीं जो सोनोराम एंड व्हाट मोजेब को था नहीं जो, ये तुमको कैलिफोर्निया रे देखा जो, मेक्सिको गोबी को था नहीं जो, चाइना रे अच्छी, कालहारी desert को था नहीं जो. These are the desert. Here is the western side, here is 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 western side. These are the western side of the continent तुमको देखा होची. That is why because easterlies रो impact कम रहिबो, एटी cold current रहउची. Here is the cold current, here is cold current, here is cold current, एटी cold current देखा जाए. So cold current also one of the factor. So one of the factor is like California cold current here. Here is Humboldt cold current. California देखा जाबो. Here is तुम्हारा Benguela. Here is
कोल्ड को कह वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट देखा जिवो सो दीज आर द फैक्टर्स आम कहि परिबा ओके सो दैट इज व्हाई वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट हमको देखा जिवो कोन देयर वुड बी डेजर्ट नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आम डिस्कस करूचे ओपीएससी मेन टेस्ट सीरीज रो हमें दास वेज हॉप रो जो मेन टेस्ट सीरीज रही है हमारा जोटा कंडक्ट ऑलरेडी हे सारी वेज हॉप रो ताको हमें डिस्कस करूचे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा फटाफट आम देखिबा सर्कम पैसिफिक जोन कौन ये देखो पैसिफिक ओशन रो सर्कम पैसिफिक जोन को एटा होचे रिंग्स ऑफ फायर सिंपल तुमको कह जाउचे रिंग्स ऑफ फायर बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है कहना टेस्ट ऑब्वियसली हमें ग्रेजुअली बेसिक क्वेश्चन देखिए हमें बेसिक रु हाई लेवल क्वेश्चन को जीवा रिंग्स ऑफ फायर जति ताको कहे पैसिफिक ओशन तमे लिखिबो कि पैसिफिक ओशन व्हिच कवर्स इटसेल्फ द ट्रू हार्ट ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ द ग्लोब्स एंड द circumference the circum region of the Pacific region or the region also called as the rings of fire because of the continuous volcanic eruption and the active zone okay because all around the Pacific region there is the submergence of the plate or that is the subsidence zone or you may say the plate convergence boundary okay so that is the plate tectonic आम कहबा है ना प्लेट the plates are converging the plates are converging there okay subduction zone जाको आम कहू that would be subduction zone or convergent boundary आम कहि परबा so that is why volcanic eruption all around the Pacific like you can see the चुंडी फुका कथा नहीं जा कोकोस कथा नहीं जो है ना तमे फिलीपींस कथा नहीं जो तमे अनाजका प्लेट कथा नहीं जो ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कथा नहीं जो नॉर्थ अमेरिका कथा नहीं जो all around Pacific Ocean जति मु तुमको देखेबी here you can see the Pacific Ocean map here is the South America Nazca plate is going down Cocos plate is going down below the Middle America or the Central America here is हमको देखा जो that is the what Joandifica plate it is submerged करूची एटी तुमको इंडो here would be New Zealand पाखरे subduction Philippines पाखरे subduction Japan पाखरे subduction Aleutian Island पाखरे Kurile Island पाखरे so all around the Pacific Ocean तुमको देखा जो subduction zone so these are the subduction zone जो देमें क्या Pacific Ocean रो so that is why the volcanic eruption is taking place यदि मो मैप ड्रॉ करिबे मो मैप लेट्स से मोते जे ड्रॉ करे पे करो फटाफट मो ड्रॉ करी मैप केंती देखो केंती मैप ड्रॉ करा जाए how to draw the map here would be North America here would be तमरो South America then let's say here would be Australia New Zealand is here okay Indonesia एठी रहिला Japan रहिला okay this would be the Pacific Ocean रो map हमें करतले now here would be subduction zone Alaska एठी subduction होची here is the subduction here is subduction Cocos Island here is Cocos ये रे तुम Cocos here is Juandifuca here is Nachka है ना एठी भी तुम्हारा subduction here is Philippines एठी भी देखो जापान पाखरे सबडक्शन क्यूराइल आइलैंड वर्क तो ऑल अराउंड पैसिफिक रीजन देयर इज व्हाट वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनस है ना ये तुमको देखा जाए लाइक क्राकाटुआ इंडोनेशिया दिया छी माउंट रुआपेहु न्यूजीलैंड दिया जाइछि अलास्का कथा लिखि परिबो है ना माउंट फिजी जापान कथा लिखि परिबो अल्यूशियन आइलैंड जोटा कहली क्यूराइल आइलैंड कथा लिखि परिबो अलास्का कथा लिखि परिबो दीज आर द एक्टिव जोन है ना सेंट हेलेना कथा लिखि परिबो सो दीज आर द एरियाज हम कहि परिबा 7 क्वेश्चन को आसीबा डिस्कस द व्हाट ओरिजिन एंड प्रोपागेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत थोड़ा पढ़े की रखी छी और यूट्यूब रे मध्य मु बुझाई की रखी छी पूरा ओडिया रे जोटा की इजीली बुझी हबो ट्रॉपिकल साइक्लोन होची ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द व्हाट दे आर द low pressure they are basically they are the low pressure and the storm in the ocean or sorry in the on the ocean surface these are the storms जाको हम कहबा storm okay तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते इंटेंस रोटेटिंग वेदर सिस्टम जोटे देखे अच्छा कंडीशन से कुछ ना डिस्कस द ओरिजिन केमती वे कंडीशन दरकार जेमती 27 डिग्री सेल्सियस दरकार को रिलीज फोर्स दरकार 4 to that means what 4 to 22 degree latitude भीतर फॉर्मेशन ही थाए देन तुमको दरकार कोन अपर एयर डाइवर्जेंस दरकार अपर एयर डाइवर्जेंस देखा जबो देन तुमको सी सरफेस टेंपरेचर जोटा 20 सेल्सियस दिखेले देन 60 मीटर तुमको वाटर डेप्थ दरकार देन आउ कोन दरकार
let's say presence of island दरकार, Coriolis force दरकार. These are the condition which is required. Latent heat दरकार, upper air divergence दरकार, cloud formation होगा दरकार. Number of condition is required for the weak that or the low vertical wind shear force होगा दरकार. ये सब बहुत बढ़िया से पढ़ाई के रखाई हमर बेसिक क्लास जदि तुम देखो ओडिशा ज्योग्राफी रे ओडिशा ज्योग्राफी हमर सरी जाईची ओडिशा आर्ट एंड कल्चर सरी जाईची हमर एंड वी आर द फास्ट हियर इन द भुवनेश्वर टू कंप्लीट द ओडिशा पार्ट ओडिशा हिस्ट्री मध्ये हम आगो को स्टार्ट करूचे है ना ये हमको देखा जाबो सो प्रोपागेशन पई देखो दैट मींस एथरे दीटा कंपोनेंट अछि देन से कहछि ट्रॉपिकल साइक्लोन रो प्रोपागेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोपागेट केमिति हुए ना जति तुम देखियो कि साइज दैट स्ट्रेन ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्लीज ध्यान से मनको तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये देखियो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलपमेंट तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जोटा हम कहली कोरियलिस बर्ड्स ये सब दीज आर द कंडीशन हमको दरकार है ना अगस्त टू नवेम्बर दी तीनटा सीजन रहे गोटे हला तुम्हारा प्री मानसून है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन तीनटा है गोटे रहबो तमरो ड्यूरिंग मानसून एंड गोटे रहबो पोस्ट मानसून तीनटा सीजन रही था ओके देन साइक्लोन ये नेमिंग किछि दरकार नहीं तमरो ये प्रीलिम रे पछरो नेमिंग किछि दरकार नहीं है ना ये क्रोनोलॉजिकली ना अनुसार पड़िबो जा भी हो प्रोपागेट केमती हेता से प्रोपागेशन को हम देखिबा यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन रो प्रोपागेशन हम देखिबा ना कि केमती मूव केमती करे हाउ इट प्रोपागेट्स जोटा तमर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रे थिला कि प्रोपागेशन केमती कोछि डेवलपमेंट तमने समस्त जानि परिबो तार तीनटा स्टेज रे गोटे होछि तमरो अर्ली स्टेज है ना जाकू कहजे जेनेसिस देन आसबो तमरो premature, mature and cyclolysis है ना फोर्थ स्टेजेस देखि ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करे यदि तार प्रोपागेशन कथा देखिबा जोटा तुम लिखि छी प्रोपागेशन ये विंड ड्रिवन थाए दैट वुड बी विंड ड्रिवन और तार पाथ थाए सबले पैराबोलिक पाथ थाए ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलवेज मूव थ्रू द पैराबोलिक पाथ एंड इट शुड बी विंड ड्रिवन है ना विंड ड्रिवन थाए मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट कुछ वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट so that parabolic path would be there despite the India being one of the that is the countries of the Gondwana its mining industry contributes much less to the domestic gross GDP in percentage discuss why देखो इंडिया जदियो गोंडवाना लैंड रो पार्ट देन माइनिंग इंडस्ट्री हमर जीडीपी रे काहे करूची ओनली 1.75% तमर जीडीपी रे हेल्प करूची लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखबो तुम 7% साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दे कंट्रीब्यूट 7% ऑफ द जीडीपी हमरो काहे की कम तो रीजन होची कि हमरो एठी कोन मोस्ट ऑफ द माइनिंग्स लोकेटेड इन द डीप फॉरेस्ट जार क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा दरकार ट्राइबल एरियाज रे लाइक द मियामगिरी हिल है ना जोटे बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिले है ना दैट इज डोंगरिया कॉन्ट बेल्ट इन ओडिशा असम these are the area travel area then mining sectors else from the what I would say required multiple clearance दरकार जोटे के तुम देखा केतरो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक सी केतरो लोकल गवर्नमेंट आसुनांती ट्राइबल बने दो नहांती हाई टैक्स होची टैक्स रो हाई टैक्स हमर लागुची माइनिंग रे बुझि परछनी फॉर एग्जांपल देखो 64% मंगोलिया रे केते देखो ओनली 30% 31% चाइना वगैरह रे 38% टैक्सेस सो इंडिया रे टैक्सेस बहुत ही ज्यादा है ना माइनिंग रे ये गोटे फैक्टर होची देन आमे देखिबा आ कोन देन लाइक तुम देखि परबो सेल्स टैक्स लागुची तो टैक्सेस बहुत है मल्टीपल क्लियरेंस दरकार हमको then other issues like what outdated mining equipments हमरो कोठी हमरो minerals रो quality of minerals भी बहुत खराब then हमको टेक्नोलॉजी ठीक से नहीं इन्वेस्टमेंट होनी pollution होची तो number of causes होची सो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट देखो दैट मींस लिखा है 2.5% टारगेट करो बाय 2030 है ना देन ब्रीफ डिस्कस ऑफ द current development of the regarding the Sukopaiko river
ये सुकोपाइको रिवर जदि हम देखा बहुत इंपोर्टेंट कथा सुकोपाइको रिवर्स होची कोन गोटे ये गोटे होची डिस्ट्रीब्यूटरीज वन ऑफ द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ व्हाट माइटी महानदी इन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स हम देखिबा सो ये जो सुकोपाइको it branches from the Mahanadi at that is but Ayatpur village Cuttack districts and 40 kilometers जाइकी ये मिसिछि कोठी parent river पुनी तारापुर पाखरे parent river पाखरे मिसिछि so it covers 3 blocks of Cuttack रो सदर्स ए तमरो Cuttack districts रा सुछि किछि पार्ट्स कोन जगतसिंहपुर बे आसे रघुनाथपुर कथा नै छ देन तमरो निची टाको कोइली निश्चिंत कोइली जाको पाछि निश्चिंत कोइली रघुनाथपुर Cuttack सदर सुकोपाइको रिवर इंपोर्टेंट सिस्टम महानदी टू कंट्रोल द फ्लड प्लेन बा फ्लड वाटर ये कहीं की नहीं देखो एनजीटी बर्तमान डायरेक्ट कर ओडिशा गवर्नमेंट को टू रिवाइव द सुकोपाइको रिवर विद इन द 6 मंथ है ना रिवर को डेडलाइन रिजुवेनेट करा जिवो है ना टारगेट निया जायछि सो इट हैज गिवन डेडलाइन टू रिजुवेनेट विद इन द that means but March 2023 to the Odisha government ko deichanti it has a long standing battle for the villagers to rejuvenate this river for their livelihood since 1950s the construction of dam reservoir without taking care of the capacity of the rivers has made the distributaries of the Mahanadi dead so river dead heji taku हमको revive करिवार अछि सुकोपाइको rivers कथा नखि जिवो निश्चिंत कोइली रघुनाथपुर and Cuttack सदर so these are the area जोटा कि ये river जाउची river को revive करियर अछि question number 10 throw a light on the interior of earth देखो earth रो interior को जदी तमे देखिबो सेतरे तमरो core अछि mantle अछि and crust अछि आ सेतरे astrosphere में बथे समस्त जानछो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आकु म तुमको कोन कहबी देखो ई होछि तमरो here you can see है ना ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूनी तो मैंने देखि देबो ओके लास्ट क्वेश्चन को बस बहुत बेसिक क्वेश्चन सेटा देखि देबो हां ज्योग्राफी ऑप्शनल जो माने चाहिबो ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं परिबो दिस आर द आवर टॉपर्स 2018 रैंक 10 थिला है ना हियर देन वी गॉट आल्सो रैंक 10 इन फॉर्म ऑफ निवेदिता शी वाज आल्सो माय स्टूडेंट इन 2019 अगेन रैंक 10 इन 2020 मध्ये द लास्ट बैक टू बैक 3 इयर्स ज्योग्राफी ऑप्शनल रैंक 10 from my classroom यदि हम देखि परिबा so these were the candidates of the geography optionals in the year 2020 2019 and 2018 as well the geography optional तो मतलब they were my fast batch student हम कहि परिबा so they are the fast and they are also my core student as well The last question of the section A of the main test series is Hopro throw a light on the scenario of the coastal erosion of India and Odisha. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये तमरो लेटेस्ट क्वेश्चन आसीची यदि ये देखिबो तो रिपोर्ट आसीची एथरे रिपोर्ट रा में देखि देउचे बस मु तुमको किछि डेटा कहि देउची हम ओडिसा रो जति देखिबा 25% of the total 25% of the total coastal line is subject to highly eroded खास करके तमरो केंद्रापड़ा गंजाम भद्रक okay these three districts are highly subject to erosion and Baleshwar the highest erosion तुमको देखा जो केंद्रापड़ा and गंजाम the highest coastal erosion कोठी देखा होची केंद्रापड़ा and गंजाम ओके एंड खास करके सातभाया एरिया सातभाया जो विलेज होची सातभाया जोटा कि मोर पूरा विलेज को इवैक्यूएट कराइची बिकॉज ऑफ द हाई इरोजन एंड इवन हमको गंजाम रे बहुत सारा विलेजेस के मध्ये इवैक्यूएट करिया को पड़ुची बहुत सारा एरियाज होची जोटा कि समुद्र में मिसी गलेनी तो दैट मींस हम के ये रिपोर्ट पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन अछि तुमको एथरे म तुम कहली दैट मींस हमर जो 450 किलोमीटर कोस्टल लाइन अछि को डेटा रे 480 किलोमीटर भी कहा जाउची जा भी 450 तम लिखि परिबो 480 लिखि परिबो तार 25% हम देखबा आउट ऑफ दिस दे आर सब्जेक्ट टू हाई इरोजन खास करी केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एंड गंजाम सो हाईएस्ट होची केंद्रापड़ा फॉलोड बाय गंजाम ये तुमको देखा जिवो सो है ना ये तुमको ओडिसा सिनेरियो को तुमको कहतली आ पर मध्य मु हम जो बेसिक क्लासेस होची सेथरे मध्य में क्लास नेकी रखिचे है ना देन सब अधिक होची तुमरो बेंगल 65% कैन यू इमेजिन बेंगल रो सब हाईएस्ट इरोजन जदि इंडिया केस रा में देखबा वेस्ट बेंगल सब हाईएस्ट फॉलोड बाय केरला केरला रे होची 46% कोस्टल एरिया इरोजन होची देन आसबा तुमको जदि पुडुचेरी कथा में नैजबा 56% पुडुचेरी लास्ट स्टेट रे 56% 42% होची तमिलनाडु 42% तमिलनाडु 23% होची तुमरो
Karnataka 23%, Karnataka. So these are the, and what 27% तुमको देखा जो, and overall जो आम देखा that is the 25% जोटा कहली मु तुमको वेस्ट बेंगल जो सब हाईएस्ट देखा जो, तमिलनाडु कथा कहली, पुडुचेरी कथा कहली, केरला कथा कहली 46%, कर्नाटक 23%. So these are the scenario of coastal erosion. West Bengal 60.5, Odisha 25, 28 Andhra Pradesh, 56.2 Puducherry, 42% Tamil Nadu, 46% Kerala, 23.7% Karnataka. This is the coastal erosion scenario of India and Odisha मध्य में discuss कर दले. So है ना, ये current affair question आसी, and here you can have the data as well, है ना. Here you can see the data 45% to 55% हमको ग्रीन तुमको देखा जो बहुत सारा. ये देखो तुमको सातभया रीजन जोटा कहली, पदमपेटा कन्फ्यूज रीजन तुमको बहुत सारा रीजन रे तुमको देखा जो. दीज आर द बालियापंडा तुमको देखा जी पूरी बीच. सो दीज आर द एरियाज हमको दिया जाई जोटा कि बहुत सारा कोस्टल इरोजन होची. सेकंड पार्ट नहीं कि हमें नेक्स्ट टाइम ऐसा सेकंड पार्ट को नहीं की.